Uh, Now I request Mr. Vijay Srirangan, Director General, to accompany the Honorable Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Shri Girish Balachandra Bapat, Honorable Minister, Government of Maharashtra, to the dais. I request Dr. Annapure, Uday Annapure on the dais. I also request Mr. S.G. Annapure on the dais. Mr. Vijay Srirangan became Director General of Bombay Chamber of Commerce and Industry on February 9, 2016. Prior to this, he had spent 36 years with Tata Group as a part of Tata Administrative Service, focused in TCS. During his career, he has had a wide spectrum of responsibilities, which includes training, applied technology, research, international sales, turnkey engagement, as well as system integration. He is a gold medalist from IIT Delhi as well as from IIM Ahmedabad. And now over to Mr. Vijay Srirangan to deliver his welcome address. Shri Girish Balachandra Bapat, Honorable Minister, Food, Civil Supplies, Consumer Protection Department, Government, Maharashtra. Mr. S.G. Annapure, Joint Commissioner of Food. Dr. Uday Annapure, Head of Department, Food Engineering and Technology Department, Institute of Chemical Technology, VP AFST, distinguished speakers, ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you. I'll just take a few minutes to thank Honorable Minister Shri Girish Bapat for taking the time from his busy schedule to be chief guest at this seminar. Thank you, sir, for joining us today. We are also pleased to have Dr. Annapure, VP AFST, with us, who will be moderating the interactive session on Make in India and FDI processing. We are also pleased to have Mr. S.G. Annapure for this session. I'll just use this occasion to just say a few words about the Bombay Chamber. The Chamber is an effective vehicle of communication between regulatory bodies, the corporate world, and society at large, and has been playing this role in India's development for 180 years. We therefore concentrate on promoting good governance and ethical conduct in business and public life, in addition to ensuring equitable and balanced industrial growth. All I will say is, if you're around for 180 years, I suppose you must be doing a few things right. I have the proud privilege to mention, as an illustration, that the Chamber, playing the role of corporate as a citizen, has undertaken and actively engaged in many activities. To name a few, we are working with the Bombay High Court, sir, for setting up a mediation center, alternate dispute resolution. We've engaged with the Municipal Corporation of Greater Bombay for setting up Arts and Crafts Center. We have worked with the US Department of Commerce for supporting women entrepreneurs. We've tied up with BEST for creating world-class maps for BEST bus routes. We have worked with USAID Low Emission Asia Development Program for working with an objective to build capacity for our members in developing low carbon footprint strategies and also cut down on greenhouse gas emissions. We have encouraged efficiencies for small and medium enterprises via a UK-India Education Research Initiative program for training SMEs for capacity building. We have trusts of the Chamber that undertake research engagements for the betterment of the city. We have a Young Bombay Forum that has a Shadow the Leader program where young entrepreneurs are allowed a once-in-the-lifetime opportunity to meet heads, chairmen, and managing directors of senior corporate enterprises. We're also working with a unit called Janagraha for addressing concerns of the citizens of Bombay. I'd like to mention that we also have an agricultural committee that relentlessly works towards the welfare of all stakeholders in the agri-value chain. The committee conducts many programs for the industry and farmers alike. One such is a flagship program which we conduct every 2 years called AgriCorp from the year 2000 itself and has become a brand in itself. I'd also like to briefly mention, in particular, so far as this sector is concerned, we are all well aware
that the food industry is emerging as a high growth and potentially high profit sector given immense potential for value addition, particularly within the food processing industry. We know we have the food processing industry growth in the rate of more than 11% per annum in the past and expect to continue this growth at an accelerated pace into the future. In so far as that industry is concerned, the food and grocery account for 31% of India's consumption bucket. As far as the food processing industry itself is concerned, I'm not going to say too much more about it because that's the subject matter I'm sure the minister will choose to address and all of you are experts at. As far as other elements of this seminar is concerned, we would like to ensure participation and sustained impetus for this sector's growth. I take this opportunity to thank our sponsors for extending sponsorship in support of this seminar. We look forward to continued support from our members as well in this regard. Thank you very much for taking the time, ladies and gentlemen, Honorable Minister, distinguished panelists here. Thank you. Thank you, sir, for your welcome address. Honorable Shri Girish Bapat is a Cabinet Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Protection. One of the top BJP leader in Vidhan Sabha, he represented consecutive 5 terms from Kasbapet constituency in 1995, 99, 2004, 2009, 2014. He has held the position of Secretary BJP Pune in 1980 and President BJP Pune in 2006. He was Chairman Pune Municipal Corporation Standing Committee in 86-87. He held the position of Director Krishna Khore Vikas Mahamandal in 1997. During his illustrious career, he has been involved in many social activities like being the President of Natrang Academy Cultural Organization, Vice President of Maharashtra Rashtra Sabha Samiti, Editor Kamal Doot, to name a few. Currently, he is also holding the position of Guardian Minister, Pune District. I now request the Honorable Minister Shri Girish Balachandra Bapat to address the audience and inaugurate the seminar. Dignitaries on the dais, all the members, representative and friends. I must say sorry to you because I was supposed to come at 10 o'clock here for opening ceremony and today our cabinet was started at 10 o'clock. So I must be present there for the cabinet and today I am little late for your program. मित्र हो, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आने के लिए देर हो गई क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग थी और जहाँ तक मिनिस्टर होने के नाते जहाँ कहाँ कोई प्रोग्राम हो तो मुझे लेट होता है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि मिनिस्टर को सुबह बुलाए तो शाम तक वो आ जाता है मेरी ऐसी बात नहीं है I always see that I will go in time and that discipline everybody should maintain. मुझे खुशी हुई कि आज आप सब लोग यहाँ आए हैं विजय श्रीरंगन जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बॉम्बे चैम्बर के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है और you have concentrated to this subject and open it for the discussion in the state, in the country and in the market. I am thankful for the opportunity given to me by Mr. Vijay Srirangan and Mr. Jay Kumar of Bombay Chamber of Commerce and Industries to interact with the key stakeholders of food processing sector.
I apologize for the delay as our cabinet meeting was preponed today. The center decision to allow 100% foreign direct investment (FDI) in the food processing sector and efforts by our CM Devendraji Fadnavis will definitely boost agro-industrial investment in Maharashtra, which will further help us to lessen the agrarian crisis. The food processing units will help Maharashtra to process 40% vegetable and 30% fruits, which are wasted due to a lack of infrastructure. I am glad that major investments are to be done by the international food industries giants in Maharashtra. This seminar can address various issues faced by the industries. Our Food and Drug Commissioner, I don't know whether he has come here or because he was, no? He's out of station or? Yeah, because I also request him to come here. But you people are here, no problem. Yeah. We are committed to give all the facilities to industries, and we expect all industries to follow strictly quality and safety standard issued by FSSAI. Organized and scientific knowledge is available in government institutes like CFTRI, ICT, Mumbai to solve your questionnaires. We have potential to become a kitchen to the world. I think this concept you must have discussed on this issue, or you will discuss on this issue. The kitchen to the world by production of mass as well as niche products. Our environment is considered to grow various raw material, and our international presence is shown by our wine mix by adhering to international standard. We are expecting inputs to food processing units like food, thereby products like the mango, candies and orange-based products in Vidarbha region. Also, we have a great potential in exporting vegetable if sophisticated machinery is utilized in preserve. Vegetable, by controlling the moisture content, we produce our own internationally famous namkeen products by machines so that the standards are met in international market. Also, the vacuum is filled as the international products like Spanish sauce, bread, crumbs, chocolates are products in Maharashtra as stock MOFPI has given subsidies to such units, thereby reducing import substitutes and helping the B2B format. मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने पाई उसमें महाराष्ट्र स्टेट में मोर देन 16,512 इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज कार्यरत है। उसमें से 322 बड़े पेनापे पे इंडस्ट्री लगी है और उसका काम चल रहा है। भारत विश्व में 6 नंबर पर फूड इंडस्ट्री के लिए है। वो 1 नंबर तक जाने के लिए जो कोशिश आप सब लोगों ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, वो जरूर करेंगे। ये सब काम करते हुए जब कानून का विषय आता है तब फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 उसमें रेगुलेशन 2011 में हुआ। मैं आप सबको आश्वासित करता हूं कि इसमें कुछ अगर बदलाव, चेंजेस लाना है
आपके कोई सजेशन है तो यू प्लीज़ गिव अस इन राइटिंग, वी विल कंसिडर इट. Last week when I was there at Delhi to solve some problem for discussion in the center minister, he also suggested me कि any suggestion from your state will be accepted, we will think over on it and we will see that the act will also be improved. ये सब श्रीरंग जी आप भी इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कभी एक बार लॉ हो जाता है, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ जब ये डिपार्टमेंट में काम करना चालू किया तो 50 साल 60 साल इतने पहले पुराने कानून बनाए गए हैं और सिचुएशन, साइंस, टेक्नोलॉजी ये इतनी जल्दी से बदल रही है कि इसमें कुछ और चेंजेस करना ज़रूरत है और हम ज़रूर करेंगे ताकि अब सब लोगों को सुविधा हो, कठिनाई न आए और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन मिलने के लिए हो जाएगा. ये भी एक खुशी की बात है. 1039 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज इसमें हो रही है. ये बढ़ना चाहिए क्योंकि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहाँ बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कर सकते हैं. नया नया टेक्नोलॉजी हो और कोई भी फार्मर्स के लिए, जो ज़्यादा करके महाराष्ट्र में फार्मर्स की सुसाइड हो रही है, ये भी एक चिंता का विषय है. तो आप लोगों को जितने सुझाव आएंगे, आप लोग फार्मर को, फूड इंडस्ट्री को साथ लेके जो कोई नया टेक्निक अडॉप्ट करेंगे उसका भी स्वागत है, वो करना चाहिए. वो समय की मांग है और मुझे खुशी है कि हर तरह के अन्य प्रकल्प, प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन रूरल एरिया फार्मर्स के लिए चल रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इसमें सब लोगों को मदद कर रही है. लेकिन सरकार ने मदद करने के बाद ही सभी होता है, ऐसा हमारा विश्वास नहीं है. सरकार के साथ आप जैसे लोग जब जुड़ेंगे और जो कोई सुझाव आप देंगे, जो प्रैक्टिकल चेंजेस है वो करने की कोशिश हम करेंगे. और जैसा मैं पहले बताया कि भारत ये विश्व का किचन होना चाहिए. इतना पोटेंशियल भारत में है, इंडिया में है. और जहाँ तक मैं स्टेट में घूमता हूँ, देखता हूँ तो हालत बहुत बुरी है. पानी अपने यहाँ है, एग्रीकल्चरल फार्म, खेती अपने यहाँ है, लोग हैं जो काम चाहते हैं, फार्मर्स हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन विलेजेस में उनको काम नहीं, इसलिए वो भागकर सिटी में आते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं. लेकिन खुद का जो फार्म हाउस है, फार्म है, खेती है, वो वहाँ ऐसी ही पड़ी है. जानवरों को देने के लिए भी वहाँ पानी नहीं. तो ये सब में सुधार लाने के लिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने जो अनेक विध उपक्रम शुरू किए हैं, इसमें एग्रीकल्चर को बहुत प्राधान्य दिया है. आप सब लोगों का सहकार्य, सरकार की सक्रियता, मुंबई चेंबर जैसे संस्थाओं का सहभाग और मार्गदर्शन, इस सब को लेकर एक क्रांति इस देश में हम कर सकते हैं, जो कि केवल भारतवर्ष में नहीं तो जग में, विश्व में कोई भी आदमी भूखा रहे ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती. और इसके लिए जो कष्ट करना है, जो नियोजन करना है, जो प्लानिंग करना है, जो नया नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, चेंबर इसमें रिसर्च करता है, स्टडी करता है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के लेक्चर आप देते हैं. ये सब अच्छा उपक्रम है. मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ. और जब तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल पैदा होता है
My department is always open for suggestions and discussion. सर, आप कभी भी हमको बुलाइए। श्रीरंग मेरे डिपार्टमेंट के चाहे कमिश्नर हो या ऑफिसर्स हो, हर एक आदमी इस काम में जुड़ा हुआ है, आपको सहायता देगा, आपका मार्गदर्शन देगा। और वो दिन मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ अनाज की पैदा ज़्यादा होती है, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, और ये महाराष्ट्र में या देश भर, मैं तो आगे जाकर जग में, विश्व में कोई भी आदमी आधा भूखा रहे ऐसी स्थिति न हो, और मनुष्य मात्र से लेकर जानवर तक, एनिमल्स तक सभी लोगों को खाना देना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक पवित्र कार्य है, काम है। इस काम के लिए तुम और हम एक साथ, एक विचार के साथ जुटकर काम करेंगे। यही संदेश आज के इस कार्यक्रम से मेरे जैसा मंत्री लेकर जा रहा है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, चेंबर को धन्यवाद देता हूँ, और आगे आने वाले समय में हमारी तरफ से जो कोई मदद, मार्गदर्शन, इवन सरकारी फंड्स की भी ज़रूरत हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ऐसे प्रोग्राम के लिए भी गवर्नमेंट तरफ से मदद की जाएगी। इसका आश्वासित करके मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मंत्री महोदय ने जैसा कहा कि हमें 6 से 1 नंबर तक पहुंचना है, हम वहां ज़रूर पहुंचेंगे गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। जैसे मंत्री जी ने सुझाया कि हम अपने सुझाव गवर्नमेंट को प्रकट करें, ये शीघ्र ही हम करेंगे। थैंक you very much, sir. It was indeed a privilege and an honor to have you with us, sharing your valuable inputs. Your inputs were very motivating. I can see that the audience is very keen to interact with you. I request all present to be patient as we commence the interactive session in a short while. As a token of appreciation, I request the Director General to present a silver salver to the Honorable Minister. I request Director General to present a memento to Dr. Uday Annapure and Mr. S.G. Annapure.